हाय वगैरह बाद में करेंगे हमेशा की तरह। आज विकी कौशल के कुछ ऐसे सीक्रेट्स और दिलचस्प किस्सों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जिनमें से काफी सारे आपने नहीं सुन रखे होंगे एंड बड़ा मजा आएगा। लेट्स बिगिन। लेकिन हु इज विकी कौशल अपार्ट फ्रॉम कटरीना's husband? Okay, that's a bit too much. He acts well. I was just kidding. Most of you probably know Vicky Kaushal from the blockbuster movie Uri, Razi, Sanju. But did you know he was also an assistant director for the iconic movie Gangs of Wasseypur? Yes, things are getting interesting. Let's start from the beginning. So Vicky was born on 16th May 1988. Yes, noted ladies. In a chawl in Mumbai. He lived in a small 10 by 10 ka room and saw his home gradually improve, which is why he really values the things he has achieved through his hard work and success, of course. And he describes himself as a very ideal, like he said in his latest podcast, Raj Shamani के साथ उसने किया. उसमें he said that if something goes wrong, he sticks to fixing it before moving on. And that explains a lot about how he has improved in his acting journey overall. And his dad, Shyam Kaushal, is a big deal in Bollywood. He is actually a stunt director behind hits like, wait for it, Wednesday, Gulal, Krish 3, Bajirao Mastani, Slumdog Millionaire, Gangs of Wasseypur and the OG. बट होल्ड ऑन, इसका मतलब विकी कौशल भी नेपो किड निकला? इसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो विकी ग्रू अप इन अ पंजाबी फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पढ़ा है उसने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। एंड डिस्पाइट हिम बीइंग अ स्टूडियस किड, ही लाइक टेकिंग चार्ज एज अ कल्चरल हेड ड्यूरिंग हिज कॉलेज फेस्ट, और बड़ा मजा आता था उसको ऐसे कल्चरल मतलब ऐसे क्रिएटिव चीजें करने में। बट ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स ही कुडंट सी हिमसेल्फ वर्किंग इन अ 9 to 5 जॉब एंड ही रियलाइज दैट हिज हार्ट बिलोंग्स टू द फिल्म सेट। तो उसने एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया. And he even joined theatre groups led by Nasiruddin Shah and Manav Kaul to sharpen his skills. And trust me, you wouldn't even recognize him in those old performance videos that I'm going to show you now. Now let's dive into his movies for a bit. So initially, even though he appeared for many auditions, luck kind of never seemed to favor him. Reject ही हो जाता था लड़का हमारा बार बार. लेकिन in 2011, he finally got to act for the first time in a play called Lal Pencil. I don't know why this reminds me of गुलाबी साड़ी अड़ी लाली लाल लाल. खैर, जिसके बाद विकी कौशल को मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर. एक सेकंड, गैंग्स ऑफ वासेपुर वो तो मैंने कई बार देखी है. भीड़ में खड़ा था क्या विकी? नहीं यार, सुनो तो 2011 में जब गैंग्स ऑफ वासेपुर बन रही थी तो श्याम कौशल वॉज इट स्टंट डायरेक्टर. एंड हाँ, यू गेस्ड इट राइट, विकी को एज एन एडी उस फिल्म में काम करने को मिल गया था विद डायरेक्टर अनुराग कश्यप एज हिज मेंटोर. नेपोटिज्म which just goes on to show that he has been a part of some very iconic projects which somehow we were never aware of. Gangs of Wasseypur पे as an AD काम करने के बाद विकी says that Gangs of Wasseypur was like a turning point for all the stars who worked on it, and he considers the movie just like a film school for him. In that very year, he also landed a small role in Love Shafte Chicken Khurana, which kick-started his journey in Bollywood acting. उसने एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है, मैं शर्त लगाती हूँ तुम में से किसी ने नहीं देखी होगी, जिसका नाम है गीक आउट. 2015 में आई थी, YouTube पे देख लेना. Early on in his career, he also appeared in the period gangster film Bombay Velvet, directed by again Anurag Kashyap. And it is not very often that actors get these kind of chances to showcase their talents this early. But Vicky really nailed this role, man. Also, did you know that Vicky Kaushal is hydrophobic? उसको पानी से डर लगता है. That's right. आसान में उसने डायरेक्टर को झूठ भी बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और उसने ऐसा डाइविंग वाला सीन कर लिया था. आसान में उसने डायरेक्टर को झूठ भी बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और उसने ऐसा डाइविंग वाला सीन कर लिया था. एंड रिमेंबर दैट सीन मसान में वेयर हिज कैरेक्टर हैड टू ड्रिंक एंड स्पिल हिज हार्ट आउट, जिसमें वो डायलॉग है कि दुख काहे खत्म नहीं होता है बे. वेल, विकी डज नॉट ड्रिंक बट ही इंसिस्टेड ऑन यूजिंग रियल एल्कोहल फॉर दैट सीन ताकि रियल लगे. एंड ही गॉट सो इनटू इट दैट ही एंडेड अप शेडिंग रियल टीयर्स. नाउ दैट्स डेडिकेशन गाइस. एंड आपको बता दूं कि विकी कौशल एंड नीरज घेवान, डायरेक्टर ऑफ मसान, दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेट पे. अब क्या खिचड़ी पकी ये वही लोग जाने. चलो मसान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उसकी दूसरी फिल्म्स के अंदर घुसते हैं. तो उसकी ना एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म आई थी जुबान 2016 में. एंड हिज कैरेक्टर इन द मूवी हैड अ स्टैमर, हकलाता था वो. सो विकी वर्कड विद अ स्पीच थेरेपिस्ट टू मास्टर द स्टैमरिंग पैटर्न्स फॉर हिज रोल, एंड ही एब्सोल्युटली किल्ड इट over there as well, people. And this movie was screened as an opening for the Busan International Film Festival and was the first Bollywood film to be featured in Asia's biggest film festival. Unfortunately, both Masan and Zuban were flops at the box office. लोगों को कदर ही नहीं है यार अच्छी फिल्मों की. लेकिन I have to take my words back क्योंकि in 2018 Vicky starred in Razi playing a Pakistani army officer, and the movie was a huge hit, showing off how he can handle tricky roles like a boss. All right, are you all ready for this bomb that I'm going to drop on you guys? Here it goes.
When I say a line, you fill in the rest. Ready? Let's do it. How's the Josh? And I hear you all saying, Hi sir! That's the kind of impact Vicky brought with his movie Uri, The Surgical Strike. It hit theatres right after a significant moment for the Indian Army, which also gave a boost to the movie market, obviously. Vicky's role as Major Vihan Singh Shergill wasn't just intense, it was super inspiring. इस मूवी के लिए ना विकी ने 15 किलो गेन किया था 5 महीने में. Even though वो नेचुरली पतला ही है, लेकिन फिर भी he did weight training, MMA and military drills at a naval base in Kaf Parade in Mumbai. And his hard work paid off big time, man, when he snagged the national award for the best एक्टर मेल. जिसके बाद सरदार उधम आई, जिसमें विकी ने एक रेवोल्यूशनरी सरदार उधम सिंह का रोल प्ले किया था, who took down Michael O'Dwyer to avenge the जलियांवाला बाग मैसेकर. ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी and this film showcased his versatility as an actor. His detailed portrayal of a historical figure earned him tons of praise and proved he can nail any bloody kind of role. और मैं सरदार उधम की और भी तारीफ करती, लेकिन उसके बाद उसकी फिल्म रमन राघव 2.0 आ गई, जो इस समय Z5 पर लाइव है. लेकिन विकी कौशल को अपना काम उस मूवी में ज्यादा अच्छा नहीं लगा. इवन दो आपको एक बात बताती हूँ कि विकी कौशल सिगरेट भी नहीं पीता, बट ही पफ्ड 5 packs a day to prep for his role as ACP Raghavan Singh, a chain smoker. Dedication, man. And you know what? आपको लगता होगा कि उरी से विकी बहुत चल गया, but Vicky believes that it was actually Sanju that put him on the map. He told Radio City India that playing Kamli in the biopic about Sanjay Dutt's life changed everything for him. And to be honest, I agree. And hey, Vicky is not just about serious dramas and action flicks. He even dipped his toes into horror with Bhoot Part 1, The Haunted Ship, where he played a shipping officer in some seriously spooky situations. The movie had mixed reviews, but Vicky's honest acting got props. उसके बाद उसकी The Great Indian Family आई, जिसमें हमने उसकी funny side देखी, और डंकी जो राजकुमार हिरानी की फिल्म थी really got people talking because of Shah Rukh Khan and him working for the first time with Raju Irani. Now Vicky is like literally on a mission to prove he's not a one-hit wonder. He keeps surprising us with the different roles and awesome performances that he keeps delivering. And let's not forget his dance moves. Tauba Tauba is the latest example of how he can light up the stage, both on screen and off. He mentioned the choreography took 4 days and the music video shoot lasted 2 days. Was it worth it? Absolutely. 2018 के उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया था टेलीग्राफ के साथ, जिसमें उसने बोला कि मेरा सिद्धांत है नॉट टू बी रेपिटेटिव. इफ आई हैव डन अ रोल दैट्स टेकन मी टू अ सर्टेन स्पेस इमोशनली, आई वोंट रिपीट दैट. ही ऑल्सो को होस्टेड द 64th and 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड जी सिने अवार्ड्स. देखते रहते होंगे तुम टीवी पे. बिसाइड्स मूवीज, विकी का सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफी अच्छा है एंड हिज रियल लाइफ पर्सनैलिटी हैव ऑल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल इन मेकिंग हिम पॉपुलर. हिज डाउन टू अर्थ वाइब, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हाउ ही कनेक्ट्स विद द फैंस हैव मेड सुपर रिलेटेबल इन बॉलीवुड. काफ़ी काम करती हैं वैसे ये चीज़ें. दिलजीत दोसांझ को नहीं देखा क्या? वैसे मैं अपनी दिलजीत दोसांझ वाली वीडियो भी प्लग कर दूंगी इधर ऊपर, क्योंकि दिलजीत दोसांझ के लाइफ में भी कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में रिवील किए हैं, देखना जरूर. अभी वापस आ जाते हैं विकी कौशल पे. तो विकी के फैंस गेव हिम दिस निकनेम द ग्रीन फॉरेस्ट और द ग्रीनेस्ट फ्लैग ऑफ ऑल, एंड ऑनेस्टली आई वोंट आर्ग्यू विद दैट. बट यू वांट सम टी? Come here. In 2018, Vicky was rumored to be dating actress Harleen Sethi, who's been in a few TV shows and Bollywood flicks. Word has it that they split around the release of Uri. According to a Spotboy report, Harleen mentioned that Vicky ना Uri करने के बाद बहुत बदल गया. And Vicky mentioned chatting with Katrina Kaif in a film companion interview around that time also. So maybe Katrina played a part in that breakup. I mean, who knows? Anyway, हमको क्या? By 2021, Vicky and Bollywood actress Katrina Kaif tied the knot, making it one of the biggest weddings in B-Town. Tough break for some fans, but hey, that's life. Can't do anything about it. उसके बाद करण जौहर के साथ उसने अपनी वैवाहिक जीवन के बारे में भी कई सारी बातें बोली. She's a wonderful soul and one of the wisest and the most compassionate people I've ever come across. Oh, so sweet. No wonder netizens call him the green flag, guys. Yeah, whatever. And at the 2018 We the Women Festival, he spoke up for the Me Too movement in India. लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ. On a side note, his dad, Sham Kaushal, faced #MeToo accusations from a crew member during an outdoor shoot back in 2006. Her name was Namita Prakash, an assistant director at that time, and she accused Sham Kaushal of pressuring her to join him in his room for a vodka. When she refused, he persisted and even showed her an inappropriate video on his phone. After that, she and others called him out on Twitter. He released an apology video for his behavior, which means that he did do that, so not cool, man. And दिलजीत दोसांझ के past life में जो secrets हुए और जो हनी सिंह के साथ उसने एक भसड़ फैलाई थी उसके बारे में जो मैंने वीडियो बनाया वो देखना है तो ये रहा. ठीक है, देख लो. वहीं मिलते हैं.